अच्छा जी, अब देखो सीन ये है कि हमारे पास जो है ना, हमें सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वेक्टर्स की जो टाइप है वो कितनी वेक्टर। सबसे पहले तो ये देखते हैं वेक्टर होता क्या है। सही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी कंटेन टू थिंग्स, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, राइट। सही है। वेक्टर कंटेन मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर कंटेन direction. Okay, these are the two things that you should know, right? अच्छा, how many quantities are vector in your syllabus? So अच्छा जी, हमारे पास जो है कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, वेक्टर्स हैं। सही है। एंड द फर्स्ट क्वांटिटी इज द डिस्प्लेसमेंट। सही है। वेलोसिटी, मोमेंटम, राइट। एंड देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, फोर्सेस, राइट। एंड देन मोमेंट, ओके। एंड स्ट्रेस, ओके। एंड एक दो तीन चार पाँच छः सात, वेट भी तुम कह सकते हो बट वेट इज अ फोर्स, तो उसके अंदर आ जाएगा। और वर्क एनर्जी, पावर, प्रेशर, डेंसिटी नहीं, बस ये। सो दीज आर सम ऑफ द क्वांटिटीज जो कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, राइट। बस ये याद रखना प्लीज, यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज, राइट। दीज आर द वेक्टर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी तुम एएस के अंदर पढ़ने वाले हो सारी स्केलर है। सही। दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। अच्छा जी, अब हमारे पास, अगर हम सबसे पहली चीज तो हमने ये देखनी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्या होती है, राइट। हमने ये देख लिया कि व्हाट इज वेक्टर, नाउ वी आर सीइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ओके। सो वी रिप्रेजेंट द वेक्टर विद एरो, राइट। एंड यहाँ पे जो है ना हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं। सही है। सो दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर। एंड अच्छा, टेल, टेल आपको क्या शो करता है? टेल शोज कि वेक्टर किस पॉइंट पे लगता है, लग रहा है, ओके। पॉइंट ऑफ एक्शन, एक्शन ऑफ वेक्टर, ओके, राइट। एंड हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ओके। एंड द लेंथ shows the magnitude, okay, magnitude, okay। So okay. So this shows the magnitude. Clear? Any problem, guys? So yeah, so if you have two vectors, one is smaller in size, smaller in value, the other is bigger in value. So when you refer them or when you represent them on the picture, so तुम्हें एक का arrow छोटा बनाना पड़ेगा, एक arrow बड़ा बनाना पड़ेगा। Be very careful, okay? सेकंड चीज होगी, फर्स्ट चीज होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, राइट। अब उसके बाद हमें पास आता है टाइप ऑफ द वेक्टर, कि कितने टाइप को हम देख रहे हैं। सही है। टाइप ऑफ द वेक्टर्स। गाइस वैसे तुम लोग स्कूल में कहाँ कहाँ पे हो? नूर, खदीजा, आप लोग स्कूल में क्या पढ़ रहे हो? सर आज ही हमारे टीचर ने वेक्टर्स करवाया था। उनने वो पैरेललोग्राम वाला दिखाया था कि वो किस तरह सॉल्व करना है। ओके। और उसके अलावा बस पैरेललोग्राम वाला समझ में आया कि क्या क्या कैसे करते हैं, और इसके अलावा क्या चीज़ बताइए उसके, बस वही चीज़ बताइए।
पैरेललोग्राम वाला तो समझ आ गया था, उसके अलावा उन्होंने एक वीडियो दिखाई थी, उसमें कुछ और एग्जांपल्स थे। अच्छा, ऐसा किया, ओके। और वेक्टर्स के अंदर और क्या क्या पढ़ाया उन्होंने? बस अभी तो शुरू ही किया था उन्होंने। अच्छा, तो पैरेललोग्राम बिल्कुल एंड में आता है, बाय द वे। उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दी कि वो एरोस किस तरह ड्रॉ करने हैं, फिर वो साइन कॉस वाला सारा एक्सप्लेन किया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सही। चलो आ जाओ। सो हमारे पास जो है, चलो, टाइप ऑफ द वेक्टर हमारे पास है। सही, हम टाइप ऑफ द वेक्टर बेसिकली हमने जो मैंने बनाई हुई है ना, वो डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, ओके। डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली मैंने ये बनाया हुआ है, ओके। मतलब अगर आपसे बोलो कि भाई टाइप ऑफ द वेक्टर आप किस हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हो, सो दिस इज बीइंग कैटेगराइज बाय द अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ओके। According to the direction of the vector, okay. Now if you look at the direction or dimension, so the first type is one dimensional vector. Come on, dimensional vector, okay. The second is um orthogonal vectors, okay, or you can say that um two-dimensional vectors, okay. And the third is diagonal vectors, okay. Diagonal vector, okay. These are the three things. या आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हो, सही, हॉरिजॉन्टल वेक्टर, या बस सही है, सही है। अच्छा जी, पहले वाले वेक्टर का या पहली वाली चीज का तो सिंप्लीफिकेशन या अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल सी है, सही है। सेकंड वाले की थोड़ी सी सेकंड वाले की भी आसान है, थर्ड वाले की थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ओके। सही हो गया। सो अच्छा जी, इसका रूल ये, रूल हमारे पास ये है कि add all the vector add all the vectors considering their directions, सही हो गया। Like you have to consider, you have to take direction into account, right? If they are in the same direction, you have to add them. In the opposite direction, you have to subtract them, okay. So अच्छा जी, so addition कब, जो आपके पास है same direction, या vectors in same direction, or subtraction fraction जो आपके पास जो है opposite direction के अंदर आ जाए, सही हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर सिंपल सी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, let's say I have a box and this box is under the influence of three forces, right? Acha, whenever we are talking about the vectors, so vector can be in one of the two states, by the way, okay? चलिए एक चीज मैं यहाँ पे ना और ऐड अप कर रहा हूँ ताकि तुम्हें और बात समझ में आ पाए, सही है। जस्ट अगर तुम लिख रहे हो तो तुम इसके बाद ऐड कर सकते हो, अगर तुम नहीं लिख रहे हो, जस्ट सुन रहे हो, तो तुम बड़ा खराब काम कर रहे हो बैठ के। प्लीज लिख लो यार, प्लीज लिख लो, ओके। खैर, सो तुमसे मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास जो है states of the vectors, okay? So there can be two states. One is equilibrium state, equilibrium state, okay, and the other is non-equilibrium
equilibrium state. Okay. So in equilibrium state हम बेसिकली क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम ये कह रहे होते हैं कि भैया हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट की जो कंडीशन होती है दैट इज, कोई मुझे बता सकते हैं इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, क्या कंडीशन होती है? तुम लोग खामोश बैठे हो यार. एनीबडी नो द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम और द कंडीशन फॉर समथिंग टू बी इन इक्विलिब्रियम? No translational forces वेरी गुड. or rotational moments are acting. सही हो गया, वेरी गुड हो गया, सही है. तो आप ये कह सकते हो कि भाई नो रिजल्टेंट फोर्सेस. ओके. अच्छा, रिजल्टेंट फोर्सेस का मतलब होगा कि भाई ट्रांसलेशन फोर्सेस कोई नहीं है, राइट? एंड नो रिजल्टेंट मोमेंट. ओके. सो नो ट्रांसलेशनल मोशन, द फर्स्ट थिंग, जो कि रिजल्टेंट फोर्स है वो ट्रांसलेशनल मोशन जनरेट करेगी. एंड नो रिजल्टेंट मोमेंट, यानी जो है ना कोई रोटेशन नहीं होगी, राइट? इफ ये आपके पास होगा तो आपके पास जो है रिजल्टेंट जीरो होने वाले हैं. ओके. रिजल्टेंट वेक्टर should be equal to zero, right? And if you have the non equilibrium state, so आपको क्या होगा कि फिर आपके पास जो होगा कि resultant vector will be greater than zero, right? And it will have some direction and some magnitude, right? तो ये आपके पास हो जाएगा. अच्छा जी, अब रिजल्टेंट पे आएंगे ऐसा ऐसा, सही है. अच्छा जी, चलो अब मैं तुम्हें ये एग्जांपल दे रहा था. सो इफ आई हैव दिस थिंग, राइट, और मेरे पास जो है तीन फोर्सेस मैंने इसमें लगा दी, सही है. एट, 8 न्यूटन की, सही है. एंड ये चलो इसको ज़्यादा दे देते हैं, 17 न्यूटन की, एंड 6 न्यूटन की, एंड 9 न्यूटन की, राइट? कैन यू फाइंड द रिजल्टेंट प्लीज? यस, एनीबडी कैन फाइंड द रिजल्टेंट प्लीज? 14. 14. A positive 14 or a negative 14 or both? I mean positive 14. Okay. What if somebody write the negative 14 then? Like depends करता है right and left क्या लिया है. Very good, very good, very good. So since it depends upon the direction that you have choose, okay, or that you have chosen, आप क्या consider करो? So if somebody take the right word as positive, then then his overall answer would be, or his resultant would be 320, 20, right? No Great. 14. 14 दे दोगे? Resultant जब 14 नहीं हुआ. अरे हाँ हाँ यार, तो बिल्कुल सही कह रहे हो. 23 - 9 करोगे सो 14 हो जाएगा, सही. एंड इफ समबडी टेक द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट, वो उसको नेगेटिव लेता है, इसको भी नेगेटिव लेता है, इसको पॉजिटिव लेता है, देन ही विल गेट resultant as -14. Okay. And this -14 is actually showing the same thing. Okay. And the negative sign basically refer to the rightward direction. Okay. In the first case the positive sign showing the rightward direction, in the second case the negative sign showing that rightward direction. Okay. Chalo. So this is the first type. Okay, that is done. Now, if you have the second type, okay, the second type is the orthogonal vector. Orthogonal mean the two things are perpendicular to each other. Okay. So like, so and for that you have to rule क्या है भाई? Use the Pythagoras theorem to find the magnitude
Okay, to find the, oops, अबे यार दे दो ना भाई. To find the magnitude, okay, पहली चीज. And then second thing is use trigonometric ratios to find direction. ब्रो, अरे यार पता नहीं क्या मिला मुझे. हम्म. सही हो गया. सही है. दो रूल है भाई, सिंपल सिंपल. सही हो गया. यूज अ पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूज अ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू फाइंड द डायरेक्शन, राइट. दूसरा काम तुम ये कर सकते हो कि तुम इसमें जो है ना वो लगा लो, क्या बोलते हैं, स्केल डायग्राम बना लो, राइट. दीज आर द रूल्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द स्केल डायग्राम मेथड. अगर तुम स्केल डायग्राम बना रहे हो तो फिर तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ओके. देन एवरीथिंग विल बी मैनुअल, ओके. बट इफ यू आर नॉट यूजिंग द स्केल डायग्राम देन यू हैव टू डू दीज थिंग्स, ओके. नाउ कॉन्सेप्ट ये है कि भैया अगर तुम्हारे पास जो है, लेट्स से एक ब्लॉक है एंड उस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रही है, राइट. फर्स्ट इन दिस डायरेक्शन एंड सेकंड इन दिस डायरेक्शन, ओके. लेट्स से this is 6 and this is 8, okay. So बच्चों सबसे पहले मुझे, can you guys tell me कि what could be the resultant? Will the resultant be like this or will the resultant be like this? वन और टू कौन से चूज करोगे प्लीज बताओ. हाँ जी. बच्चों वन और टू कौन से चूज करोगे प्लीज बताओ यार. What could be the resultant? वन. One क्यों भाई? एनी रीजन? greater force. वेरी गुड भाई, समझ गया हूँ, बस समझ गया हूँ. ओके. सही हो गया, परफेक्ट. सो इफ दे आस्क यू टू ड्रॉ इट लाइक अपने अंदाजे से, देन यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दैट, ओके. चलो अब इस पे जरा रिजल्टेंट निकाल दो प्लीज. 10. ओके. अच्छा भाई एक सेकंड दे दो, अजान हो रही है. सही है, उससे बात करते हैं. सो आपके पास ये आ गया. अच्छा मुझे बताओगे कि इसकी डायरेक्शन क्या आएगी फॉर डायरेक्शन. बच्चों डायरेक्शन के लिए क्या, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे बच्चों, बता सकते हो. फॉर डायरेक्शन विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू यूज. ओके. सो बेसिकली तुम उसके लिए जो है, हम्म, tan थीटा, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 8/6 कर लो या 6/8 कर लो, राइट. इफ यू डू 8/6 तो वो तुम्हें कोई और डायरेक्शन बताएगा हॉरिजॉन्टल से. अगर 6/8 करोगे तो वर्टिकल से बता देगा, राइट. क्लियर. हाउ मच. आई एम गेटिंग 53.1. सही है. ये मेरे पास आ रहा है, राइट. अच्छा जी. ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ओके. सो लेट्स से रिजल्टेंट आ रहा होगा इज इन दिस डायरेक्शन, ओके. सही हो गया. एंड आपके पास जो है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ओके. सो जो एंगल होगा दैट वुड बी फ्रॉम एडजेसेंट, ओके. अगर तुम इसका उल्टा करते तो फिर वर्टिकल से वर्टिकल एडजेसेंट बन जाता, राइट. अभी फॉर नाउ हॉरिजॉन्टल एडजेसेंट है, राइट. क्लियर हो गया बच्चों. डायरेक्शन समझ में आ गई है. हाँ जी गाइस, दैट क्लियर.
हाँ ना, बोल दो यार कुछ तो। अच्छा जी, खैर। अब जो है, ये हमने एक काम कर लिया, राइट? बट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ वेक्टर्स गिवन इन द डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, राइट? अगर तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गिवन है, सो तुम क्या करोगे, यू फर्स्ट ऐड देम ऑल अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन, राइट? मतलब लाइक, अगर लेट्स से तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पे जो है ना, एक यहाँ पे लग रहा है, एक और इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक यूं लग रहा है, एंड टू आर अपवर्ड, राइट? लेट्स से, एंड लेट्स से दिस इज 10, 8, एंड दिस इज 6, ओके। ये आपके पास आ गया, राइट? एंड लेट्स से दिस इज um 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 15, नहीं 15 नहीं लेते। दिस इज लेट्स से 7, 7, 7, दिस इज 3, and this is let's say 9, okay? So if you solve all of these things, you will end up getting one resultant in x direction and one resultant in y direction, right? For the x direction, you should get 60 12, and for the y direction you should get hey hey एक सेकेंड, 10, इसका एक काम करो, 15 कर लो, सही है? 15 कर लो इसको, सही है? सो यू शुड गेट 12 and 5, राइट? ऐसे ही आ रहा है बच्चों? One resultant in x direction, one resultant in y direction, okay? And when you find the resultant, overall resultant, so you'll apply the Pythagoras theorem. So 12 squared plus 5 squared, whole thing under root, will give you 13, okay? Clear? And अगर तुम्हें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, सही है, डायरेक्शन के लिए तुम क्या करोगे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो, if the direction is asked from the vertical, then you will write 5 over 12, okay? And if they are asking for from the horizontal, then you will do 12 over 5, right? बच्चों, ये तुम लोग को बात समझ में आती है? भाई जरा बताओ, खदीजा, नूर, अहमद। जी समझ आ- पक्की बात है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन समझ में आती है? लाइक इफ दे आर आस्किंग व्हाट वुड बी द डायरेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल ऑफ दिस वैल्यू, राइट? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या कह रहा है, राइट? सो ये तुम्हारे पास हो गया, दिस इज फर्स्ट केस, राइट? एंड अगर तो तुम्हारे पास कोई वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है, देन इट इज इजी फॉर यू टू सॉल्व। क्या आप उसको क्या कर सकते हो? यू जस्ट add them all, like those in the same direction, subtract them those in the opposite direction, and that gives you the horizontal in the resultant in horizontal direction, and you have to do the similar thing for to find the resultant in the vertical direction, and then you can apply Pythagoras theorem to solve it, and the trigonometric ratio for the direction, right? But if you have given with these things, मतलब ये नहीं दिया हुआ है, और आपको जो है ना वो ये दिया हुआ है, डायगोनल वेक्टर्स दिए हुए हैं, राइट? एंड सो डायगोनल वेक्टर का रूल ये होते क्या है वो भी बता दूंगा, राइट? रूल ये है कि आप उसको क्या कर सकते हो, रिजॉल्व द फोर्सेस or the vectors, okay? Resolve the forces of the vectors, okay? Then solve it um, using orthogonal vector concept, okay? Concept. सही हो गया? ये तो हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? So if you have, let's say, two vectors are there, okay, ये आप लोग के पास दो चीजें given है। So the first vector is acting in this direction, बिल्कुल सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल है, right? 10 न्यूटन का। And another vector is acting in this direction at an angle of
45 डिग्री लेट्स से। अरे यार लाइन है सीधी नहीं बन रही, देखो जिंदगी में क्या होगा हमारी। सही हो गई। सही, एड एन एंगल ऑफ लेट्स से 40 या 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री, ओके। एंड दिस इज लेट्स से 25 Newton, okay. Can you guys predict in which direction will the resultant acts? A random prediction. Anybody? Let me draw the first direction, the second direction, and the third direction. Right? One, two, three. Which one? two. Okay, somewhere around two. Very good. Very good. Ajo let's try to solve them. Okay. So to resolve the vector, you have to break them into the components. Okay, horizontal component and the vertical component. As seen, so you can write the first thing as its horizontal component, which would be, कोई बता सकते हैं horizontal component क्या होगा और vertical component क्या होगा? You are allowed to make the horizontal and vertical component alongside with the force or the origin position पे, right? Yes, नूर बता सकते हो? Yes, नूर कहाँ गई? अरे यार नूर बता ही नहीं सकती। देखो तुम्हारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, सही है। 25 और cos 30 एंड देन 25 sin 30, ओके। क्लियर हो गया? और हमने किया कैसे? हमने ऐसे किया, राइट। अगर ये एक वेक्टर बना हुआ है, सही है, सो वी कंसिडर इट दैट वे, एक ट्राइंगल की फॉर्म में हमने सोच लिया उसको, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास 25 Newton आ रहा है, एंड ये हमारे पास आ रहा है एंगल 40, पता नहीं कितना, 30 आ रहा है, 30। सही है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंड दिस, राइट, जो कि तुम बचपन से करते हुए आ रहे हो ओ लेवल्स के अंदर। रिजल्टेंट तुम निकाल दो भाई रिजल्टेंट। रिजल्टेंट नहीं, सॉरी मार, कॉम्पोनेंट निकाल लो तुम, कॉम्पोनेंट निकाल लो, तो ये। सो तुमने क्या किया? तुमने किया कि भाई 25 cos थीटा, 25 sin थीटा। कॉस जो है वो उस साइड पे आता है जहाँ पे एंगल होता है, राइट। सो इफ ओवर हियर देयर इज एंगल, राइट, एंड 90 डिग्री है, यहाँ पे कॉस आ रहा होता है, एंड यहाँ पे जो कि सिर्फ 90 डिग्री है तो यहाँ पे साइन आ रहा होता है, ओके। सही हो गया बच्चों? सो ये हमारे पास जो होगा, ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, जब मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, नाउ आई कैन सॉल्व देम। सही है, आई कैन सॉल्व दीज वेक्टर्स, राइट। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी हैव टू वेक्टर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में वी हैव वन वेक्टर ओनली, राइट। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास जो है वो दो वेक्टर है। अगर मैं आर एक्स ले लूँ, सो दैट विल बी 10 - 25 cos 30, okay, and ry gives me 25 sin 30, ओके। दोनों की वैल्यू बता दो भाई। फॉर द फर्स्ट वन आई एम गेटिंग -1165, okay, and for the positive I am getting 25 sin, oops, shit, ये होना चाहिए था, बल्कि नहीं, सही तो किया है। और ये हो जाएगा 25 sin 30, sin 30 1/2 होता है, 25 12/2 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, सही है। ये आपके पास जो है ना कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। सही है। सो नाउ you have the x component of the resultant, you have the resultants horizontal component and resultants vertical component, जैसे कि आपने यहाँ पे करते थे। now you just need to square it and put them in under root, तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। so the overall resultant would be 12 कहाँ से आ रहा है, 12.5 plus, you have to square it, plus 11.65
And since this is a square, just put it in the square and find the value. 17.1. Okay, 17.1. So the resultant has a value of 17.1. And if you want to find out the tan, the angle, so आपके पास क्या कर लोगे? So tan theta is basically equal to um 12.5 is the vertical, okay, and 11.65 horizontally. And अगर हम ये कर लेते हैं 12.5 12.6 12.5 divided by 11.65, okay, so yeah, so that will give you your angle, okay, and इससे जो आपका एंगल आ जाएगा tan inverse 12.5 divided by 11.64, okay, so ये हमारे पास आ गया 64, and if I'm taking the inverse of it, so I'm getting the theta value as 47, okay, and this 47 is basically from the word nahi, horizontal, okay, from the horizontal, right? So for the resultant is basically in 40 degrees from the horizontal, okay, so it will be in somewhere like here, okay, and this is going to be your resultant. Clear बच्चों? Okay, this is the resultant. सही है. अच्छा जनाब चलो, ये हमारे पास था हेड टू टेल रूल, और सॉरी ये हमारे पास था डायगोनल के लिए वेक्टर रेजोल्यूशन, राइट? अब हमारे पास एक और रूल ही होता है कि जिसके अंदर जो है वो हम वेक्टर डायग्राम बना रहे होते हैं, और अब अगर वो वो आपके पास स्केल वेक्टर डायग्राम है, तो आपको फिर क्या करना होता है कि आपको उसका स्केल आइडेंटिफाई करना होता है और स्केल लिखना होता है. सही है, बट अगर जो है वो आपके पास स्केल डायग्राम नहीं है, सो यू जो भी आप ले रहे हो, यानी जो भी चीज़ आप कंसिडरेशन कर रहे हो, आपको वो चीज़ मेंशन करनी होगी, राइट? चलो जी, अब हमारे पास जो है टू मोर मेथड so two more method of vector calculation, vector solution. सही. अच्छा जनाब, so the first thing will be the head to tail rule, okay, okay. Second, first thing, second thing is, second thing is um, scale diagram. सही हो गया, ये हमारे पास है. अच्छा जी, अब मुझे एक सेकंड दे दो, फिर मैं 1 मिनट में आता हूँ, फिर उसके बाद आगे लेके चलते हैं अपनी कहानी को. सो हमने ये दो चीज़ें कही, ओके, हेड टू टेल रूल और स्केल डायग्राम, राइट? सो इफ यू आर नॉट यूजिंग द वेक्टर रेजोल्यूशन मेथड, देन यू हैव टू अदर थिंग्स टू डू इट, ओके. सो अगर हेड टू टेल रूल अगर आप यूज़ कर रहे हो, सही है, सो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा वो देख लेते हैं, एंड स्केल डायग्राम फिर उसके बाद देखेंगे, ओके, आ जाओ भाई. अच्छा जी, इसके लिए वी हैव दो चीज़ें, राइट? फॉर मैग्नीट्यूड, 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 एंड फॉर एंगल.
for angle. Okay, like how to find the magnitude. So for magnitude you have to do two things, some things. So आपने क्या करना होगा सबसे पहले कि make one vector as the reference vector, right? This is your first step. सही हो गया. Now the second step is place the tail of the place the tail of the next vector on the head of previous vector, right? And then the third is um, connect first to second vector which gives a resultant vector. Okay, these are the three conditions for like how to find the magnitude of the vector, right? And to find the angle, you should remember some of the properties of the angle, right? So if we have two lines passing like this, okay, and एक लाइन जो है वो यूं कट करेगी, right? So this angle and that angle will be the same, right? Remember, this is the first property, right? And second property is if you have the x, okay, so this angle theta and this angle theta remains the same, right? And you should know that on a straight line, you will have the total angle of 180 degrees, okay, alpha plus theta, and if you make alpha plus theta, so that gives you 180, right? Okay, these are the rules, okay, that you should remember. And इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रूल नहीं है, बस. These are the rule for angle and for the magnitude. Okay. Now let's try a question, right? और उसके अंदर ये चीज़ apply करते हैं, right? बल्कि पुराना वाली क्वेश्चन ले लेते हैं, ये जो 25 और 10 है ना, ये ले लेते हैं. Okay. So let's say this is a question with a 10 Newton right here and 25 Newton right there. Okay. Now I have to find out the resultant. Okay. And the magnitude as well. Okay. Right. आ जाओ भाई. So for resultant, for resultant, what should we do? We first have to make a vector as a reference vector, right? So it's up to you. You can take 25 and 10 Newton as a reference vector. So in the first case, I'm taking 10 as a reference vector. Okay. So if you're considering the 10 as a reference vector, so your 10 remains the same in this direction. Okay. While the f is a longer vector, so it will be like this. Okay. Okay. And now you can connect the two vectors. Okay. And the connection should be like this. Okay. सही हो गया. नाउ अब हमारे पास देखो क्या सीन है. अब हमारे पास सीन ये है कि
10 ये न्यूटन, 10 ये वाला था सही, और 25 ये था, राइट। एंड वी नो दैट कि दिस लाइन वाज एट, एक सेकंड, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ओके। सो दिस लाइन इज एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री से आ गया, राइट। 30 डिग्रीज आ गया, सही है। नाउ वी हैव टू फाइंड आर, राइट। याद रखना प्लीज, इसके अंदर साइन रूल और कोसाइन रूल इस्तेमाल हो रहे होंगे। सो साइन रूल इज बेसिकली साइन ए ओवर ए प्लस साइन बी ओवर बी, यार प्लस नहीं होता, इक्वल टू होता है, एंड देन साइन सी ओवर सी, राइट। अच्छा जी, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, तो ये वो 90 डिग्री ट्राइंगल नहीं है, सही है। तो आप उसके अंदर जो है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो आंसर, राइट। लेट्स से ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है थीटा की फॉर्म में, सही है, थीटा की फॉर्म में, और ये आपको दिया हुआ है अल्फा की फॉर्म में, राइट। ये अल्फा की फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, एंड यू नो वन साइड एंड दैट साइड इज आर, द थीटा वाली सामने की साइड है, राइट। तो साइन रूल कैसे लगाओगे कि साइन अल्फा ओवर आर इज इक्वल टू साइन, अच्छा सॉरी, साइन थीटा होना चाहिए ना, साइन थीटा ओवर आर, एंड फॉर दैट साइन अल्फा ओवर, अल्फा की सामने वाली साइड हमें देखनी है, ये वाली साइड कुछ भी नहीं है, सो हम ले लेते हैं लेट्स से एच, राइट, एंड इज इक्वल टू साइन जो भी ऊपर आएगा, राइट, 90 माइनस अल्फा और प्लस बीटा होगा, बट जो भी ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय माइनस आर, सही है। सो दिस इज द साइन रूल, ओके। एंड कोसाइन रूल आपके पास क्या होता है? कोसाइन रूल, ओके। साइन रूल बेसिकली वहां पे लगता है व्हेन यू हैव मोर एंगल्स देन साइड्स, ओके, मोर एंगल्स देन साइड्स, ओके, okay. And cosine rule is basically apply to the positions where we have more sine over the angle, okay. Now अच्छा एक सेकंड, ये जो है ना, मोर साइड्स होना चाहिए, साइड यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मोर एंगल देन साइड्स, हाँ जी सही। अगर आपको दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है कोसाइन रूल, दो एंगल गिवन है एक साइड गिवन है साइन रूल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, राइट। यहाँ पे देख के बता सकते हो कि तुमको साइन रूल लग रहा है, राइट। जब कोसाइन लग रहा है तो लगा देते हैं भैया। सो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कोसाइन रूल फिर होता है किस तरह से, कोसाइन रूल होता है इस तरह से कि कॉस, यहाँ से इसी को देख के कर लेते हैं, बल्कि ये वाली पिक्चर देख लेते हैं, कॉस कॉस आर, राइट, इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 10 into 20, ओके, 25, राइट। दिस इज हाउ द कॉस रूल लुक्स लाइक, ओके। अगर तो if you have the angle between r and 25, so you will take r as positive and 12 as positive, and negative will be your theta, your p, okay। वो तुम्हारे पास हो जाता है, राइट। अब अगर तुम इसको उसको यूज करते हुए, यानी इस हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए अगर तुम इसका r निकालो रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट विल बी cos 30, right, is equals to 10 squared plus 25 squared and minus vr, सही हो गया, एंड डिवाइडेड बाय, ओके, 25,
सही हो गया. नाउ इफ यू कैन ट्राई टू सॉल्व. सो अंडर रूट 30 बिकम 3√2. सही है. सो 100, 10 का स्क्वायर 100. 25 + v. ओके. एंड वी कह लो यार, कह लो जो भी कहना चाहो कह लो. सही, हम रिजल्टेंट निकाले, हम रिजल्टेंट ले लेते हैं. सही है. एंड डिवाइडेड बाय 2 8 16 × 25. राइट. ये आपके पास आ गया. नाउ जस्ट मेक आर द सब्जेक्ट इन सॉल्व. यहाँ पे नेगेटिव साइन होना चाहिए. राइट. अच्छा जी. अब जस्ट सॉल्व कर लो भाई. सो आपके पास रहेगा. बस यार एंड भी करना है. सो अंडर रूट 3/2. सही है. इंटू 16 × 25. राइट. एंड देन होल थिंग. और आपने माइनस कर दिया 100 के स्क्वायर से. और 25 का जो स्क्वायर होगा वो 625 होगा. सही है. सो यहाँ पे आ जाएगा 725 माइनस दिस इज इक्वल टू आर. राइट. सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू आ जाएगी 725 माइनस √3/2 इंटू 16 × 25. 378 आ रहा है मेरे पास आर. सो 380 ले लेते हैं. ओके. बच्चों ये बात तुम लोग के समझ में आ गई बच्चों? हाँ जी. जी। परफेक्ट. सही है. सो हमने हेड टू टेल रूल कर मैग्नीट्यूड, हाँ हमने हेड टू टेल रूल कर लिया है. अब एक चीज़ बाकी है, वेक्टर स्केल डायग्राम. पता नहीं शायद वो तुम लोग ने ओ लेवल्स में की हुई है. सही है. पता नहीं तुम लोग को आती है नहीं आती है, अल्लाह जाने, भूल भुला के आ रहे हो. उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा. बट फॉर नाउ आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं. सही है. अब नेक्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह